Assalamu alaikum. We are going to start with exercise 7.6. But before that, we are going to look into this chapter details and what we have to know before attempting the exercise. So, in the last exercise, we looked at the solids. What are solids? And the topic today is of surface area and volumes of the solids. So, solids are anything that is 3D एंड वी कॉल इट अ सॉलिड और नेट्स हमने उसके बनाए थे और देखे थे पिछले एक्सरसाइज में विच इज़ द 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉलिड्स सो जब हम लोग कल पढ़े थे तो उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि मैं जब इसको हाईलाइट करी थी आई जस्ट सेड कि इस साइड को या इस एरिया को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बट वी देयर इज एन एक्चुअल टर्म फॉर दिस इज कॉल्ड अ फेस सो अ क्यूब हैज 1 2 3 4 5 6 faces. ठीक है तो इसके होते हैं 6 फेसेस एंड व्हेन वी कवर ऑल द 6 फेसेस इन सब का अगर एक एरिया का हम लोग पहले लेते हैं अगर एरिया लेते हैं और अगर हम लोग 6 फेसेस का एरिया लेते हैं तो हम लोग उसको कहेंगे सरफेस एरिया ठीक है और सरफेस एरिया का वॉल्यूम जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम ये होता है कि जो इनसाइड द कंटेनर जो हमारे पास स्पेस ऑक्यूपाइड हो रही होती है उसको हम लोग कह रहे होते हैं वॉल्यूम ठीक है दैट्स व्हाट वी डू और हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूबॉइड या क्यूब इन दोनों की 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं 12 एजेस होते हैं 12 एजेस एज इन दीज लाइंस दीज आर टोटल इन 12 ठीक है उसके बाद 8 वर्टिसेस 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 so these are the 8 vertices right so let's see next ओके नेक्स्ट हमसे ये उन्होंने कहा है कि अब हम लोगों ने इस चीज को नोटिस करेंगे कि जो सरफेस एरिया है इस क्यूबॉइड का वही एग्जैक्टली इस क्यूबॉइड के नेट का एरिया है कोई अगर 3D शेप होगी तो उसका अगर हम लोग एरिया टोटल एरिया फाइंड करें तो हम कहेंगे उसका सरफेस एरिया है और अगर वही चीज 2D हो गई है तो हम उसको सिंपल एरिया कह रहे होंगे हम सरफेस एरिया क्यों कहते हैं क्योंकि ये सरफेस को कहीं पे भी टच कर रही होती है तो अगर हम लोगों ने एक सरफेस एरिया की छोटी सी टिप ये होती है कि अगर आपने फाइंड आउट करने की कितने सरफेस एरिया किस तरह हम सरफेस एरिया निकालें तो हम उन चीज़ों को देखते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं हम इसको टच कर सकते हैं बाहर वाली जगह को हम इसको बाहर वाली को टच कर सकते हैं हम इसको टच कर सकते हैं हम इस टॉप को टच कर सकते हैं हम इस बॉटम को टच कर सकते हैं हम इनर वाले को उस साइड से टच कर सकते हैं तो हम 6 फेसेस को टच कर सकते हैं जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं वो उसकी सरफेस एरिया बन जाता है ठीक है तो ये उन्होंने सरफेस एरिया का फॉर्मूला और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिखा हुआ है ठीक है उसके बाद हमारे पास प्रिज्म आ जाते हैं प्रिज्म एक ऐसे सॉलिड होते हैं जिनका क्रॉस सेक्शन जो होता है वो सेम होता है उनकी लेंथ से ठीक है जैसे क्रॉस सेक्शन ये क्या है ये चीज और यही अगर हम लोग यही उसका क्रॉस सेक्शन है तो अगर हम इसको यहाँ मिड से कट करते हैं तो हमारे पास एक और ये इसी तरह की शेप का पर स्मॉलर लेट्स से इस तरह से बन जाएगा और ये आधा जो कटा हुआ होगा वो भी उसकी भी शेप इसी तरह से ही कंटिन्यू हो रही होगी ठीक है यानी उनके दोनों की सेम लुक होगी तो दैट्स व्हाट इट मीन्स उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे ये देखो फर्दर एग्जांपल्स में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यूबॉइड जो है वो भी एक स्पेशल किस्म का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी एक किस्म का प्रिज्म है क्योंकि इसका जो ये वाले बेस है ये वाला क्रॉस सेक्शन है यही इस वाले क्रॉस सेक्शन के साथ सिमिलर है इसका यहाँ वाला जो क्रॉस सेक्शन है वो यही इसका भी सिमिलर है अगर हम एक सिलेंडर लेते हैं तो वो भी एक प्रिज्म बनता है क्योंकि उसमें भी ये वाला एरिया जो है वो भी इसी क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ मैच कर रहा होता है ठीक है तो for finding any area of a prism what we do is we find out the area of each face हर एक फेस का हम लोग एरिया निकालते हैं यानी कि मैंने इस एरिया का लेट मी डू दैट अगेन जैसे फॉर एग्जांपल ये है तो इसका पहले मैंने इस एरिया का निकाला इतने से पार्ट का फिर मैंने इस कर्व्ड सरफेस का निकाला और फिर मैंने इसका निकाला और इन सब तीनों को ऐड कर लिया मैंने तो ये मेरे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया है तो जो ये वाले दो एंड्स हैं अभी हमने बात की ये क्या है क्रॉस सेक्शनल एरियाज है रिमेनिंग लाइंस जो है वो सेम लेंथ हो सकती है कुछ भी हो सकता है ठीक है
तो सरफेस एरिया का कोई भी प्रिज्म होगा उसका क्या होगा, 2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लस पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। ये हमारे पास टोटल फॉर्मूला अगर हम लोग देखते हैं। और वॉल्यूम का प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। इट अप्लाइज टू ऑल द प्रिज्म्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सिलेंडर्स है। सिलेंडर्स भी एक प्रिज्म ही है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। So as we were speaking about this, that cylinder is a special case of a prism. We saw that earlier as well, because all of the both of the cross section areas are the exact similar ones. And let's move forward. So if we are going to make a net of a cylinder, how are we going to represent that curved area? There is a curved area which we have to represent. So that's how we can do that. We can do that in the form of a rectangle. That's the only way. So we will have two circles, circle 1, circle 2. So this is circle 1, circle 2, and this area is here, is this area, right? So the curved surface area of a cylinder, which is actually this rectangle, we will call it 2 pi r. This one is 2 pi r and this is h. So 2 pi r into h, because length into breadth, length is 2 pi r and breadth is h, so 2 pi r h. It's a formula that you should remember, because that's a very important and it's going to be used a lot of times. And volume will be of a cylinder will be pi r square h. So let's just move on to our exercise now. Question number 1, find the volume and surface area of the solid with the net shown in the diagram. So this is the net that we can see. Can you tell what type of shape it is? Look at this. This is the base. This is the this is one cross sectional area, this is another area. Like ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो अगर ये खड़े हो जाएंगे और ये वाली चीज जो है this side will come over here with this one, and it'll stand, and this one will lay on this on the top of it. So it will have a very nice look. Let me see if I can draw it properly. So it will look something like no, it should look something like this. Yes, it will look like this. Once it's done, once the net is closed, it will look like this. A better picture, but like this. Okay. So first, what's the first question? Find the volume and the surface area of the cuboid with the following dimensions. Let me do it and then I'll explain how it's going to be done. Oh, I actually just read the question number 2. Let's do the question number 1 first. Find the volume and surface area of the solid, of this solid. Okay, so it's done. Firstly, we are going to look at the volume. To find its volume, we can tell that the formula for the volume. Let me recall. It's the area of a cross section. So this is the cross section over here, or in this. So we will take area of one cross section, multiply by the height of the prism. So this is the height of the prism, or you can also call it a length. So this will be the height and length of the prism, and these are the cross sectional area. So we will multiply it with the length. So triangle will be multiplied with the length. This is the formula of area of cross section. We have half multiplied by 4, base multiplied by height, that's 3, and we are going to multiply it with the length, which is 11 centimeter, and thus we will get the final answer, 66 centimeter cube. For finding the surface area is something that we will touch with our own hands. It is the whole surface of the prism that we can touch. So we have two triangles, 1, 2, and then three rectangles, 3, 4, 5. I did them separately. I wrote all of their areas, area of half base into height plus half base into height plus length into breadth plus length into breadth, and so on. Then I substitute the values, and finally I solved it and got the final answer as this. So make sure whenever you are solving these questions, make sure to put the brackets on, so that there is no problem or ambiguity in while solving it.
I just solved for question number 2 part A, and we can see that here we have a volume. We have to find the volume and surface area of the cuboid. I just draw a cuboid and I put the values. Length was 5 centimeter, and this was the length, this was the breadth, and this was the height of 18 centimeter. Now for finding the volume, I used area of cross section multiplied by height. So now the question arises that which one is the cross section area? If I take this as the cross section area, I have to see if there is the exact opposite area on the other side. Yes. So that means it's a cross section area. It is fulfilling the requirement of a cross sectional area. But what if I take this area? But don't you think that this area is also exactly opposite and parallel to it, so that it is exactly similar? So we can also talk about that. But and what about if I take another example? Let's say if I say, let me remove this area and this area. Aren't they cross section as well? Because both of them are the same. That if we cut it in half from here, we will have a parallel side, or we will have an identical side. So that means that completes the purpose of area of cross section. So in a cuboid, we have three area of section. We can have multiple, any we can choose any of that. So for choosing area of cross section, I just thought to choose this one, which I just highlighted, 8 into 5, and then I multiplied it with the height 18. If I choose this one and this one like opposite ones, then I would have chosen the length, the height would have been this, right? So these are something which can be interchangeably used. Now, when we are talking about the surface area, we are looking at all the sides that we can touch in this. So if we look at this, हमारे पास दो दो ऐसे रेक्टेंगल्स हैं जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. एक ये वाला, दोनों ये दोनों आइडेंटिकल है, ये और ये आइडेंटिकल है, ये बाहर वाला और ये अंदर वाला आइडेंटिकल है. तो इसलिए मैंने टू इंटू रेक्टेंगल प्लस टू इंटू रेक्टेंगल प्लस टू इंटू रेक्टेंगल कर दिया, एंड देन आई रोट द formulas, or and then I substitute values in this, and then I got the final answer, this, as a surface area. Make sure to write the correct units. Make sure to look at the pictures if they are not being made, just the way I did in question number 2 part A, as there was no clear diagram that was shown, so I drew that. You should know how to make a cuboid. Now for the part B, I wrote the values again. This is the length, here is the length, there is the breadth, here is the breadth, and then the height. So again, I wrote the area of cross section into height. Area of cross section 1.2 multiplied by 2.4. So I chose again this as the cross sectional area, and then I multiplied it with the height 4.8, and I got the final answer as 13.8 millimeter cube. For finding the surface area, again, as it's a cuboid, it will be the similar one, and I substitute the values inside it. Firstly, I choose these two. Oh, just forgot. I cannot do that unless. Okay. Yeah. So firstly, I choose this one and this one. Then I chose this one and this one for the for the two rectangles, and lastly I chose the front and the back of the two rectangles, and there I got the final surface area. Make sure you're putting the brackets, and make sure you're using the correct units and correct millimeters. If they're in millimeters, then make sure all the lengths are in millimeter. If the requirement is to get in centimeter, make sure every length is in centimeter as well. Now let's move on to question number 3. For finding the volume of this crate, we have to see what shape is this. It's of a cuboid. We can ignore these soda bottles, and let me just tell me which of the formula are we going to use. Shall we use area of cross section multiply height, or we already know the formula of a to find the volume of a cuboid. We already know the formula that already exists, that is length into breadth into height. We have been using it for years. So which formula should we pick?
If we pick this one which we recently learned, or shall we go with the one which we have been studying? So even it does not matter which formula do you do use. Basically, both of them are the exact similar. So area of cross section, let's say this one and the one behind that is the cross section that we are going to use. So let's say 90 multiplied by 80, as it's a rectangle, and we're going to multiply it with the height. Height means another length. It doesn't have to be height, like you should not be particular with that we have to write 80 centimeter. No, it can be any height, it can be any length. Basically, it can be any other length which is not included in the area of, while finding the area of cross section. So this will be our 60 centimeter, so we will multiply it with 60 centimeter, and we will get our answer as 432,000 centimeter cube. But what if we use this formula? Actually, this is the exact same. For example, I do this length into breadth into height. Length into breadth is basically the area of cross section. 19 to 80 length into breadth 90 into 80, and then multiply it by 60. That's the same formula and we will get the same answer. So it does not matter if when it is only applicable in the form of cube, in the form of cuboid, where you can use the formula of length into breadth into height, right? And if you know any other prism or any other shape, shapes formula, then you can use it as it is. But for generic functions, we can always use this formula, that is volume is equal to area of cross section multiply height. It is true for all the prisms. Let's move on to question number 4 now. Okay, so for this question, we have a pencil case in the shape of a triangular prism. So we have a triangular prism. You need to visualize it on your own. यहाँ पर हमारे पास ये इस तरह से ये पीछे जा रहा है, एंड ये यहाँ से एक लाइन बिल्कुल इस तरह से एक रेक्टेंगल बन रहा है. तो हमारे पास ये एक प्रिज्म, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया बन रहा है ये इसी का, और ये इस साइड पे लाइक बैक साइड पे एक रेक्टेंगल, एक नीचे रेक्टेंगल है और एक ये रेक्टेंगल है. टोटल इसके पास 1 2 3 4 5 फेसेस हैं. ठीक है, पहले इसको वॉल्यूम निकालते हैं. वॉल्यूम निकालने का तो फॉर्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय हाइट. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल है, तो हमने ट्राइंगल के जो है बेस और हाइट ले ली, और फिर जो इसकी लेंथ है ये हमारी अनदर लेंथ जो है वो एच हो गई. तो इसके अंदर वैल्यूज पुट की, हाफ मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8 और 32 को मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया. जब सरफेस एरिया की बात करें तो फर्स्ट सरफेस एरिया तो हमारे पास ये है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं. और सेकंड जो है वो ये है. ये मैंने ना इन दोनों को, क्योंकि मुझे पता है वो क्रॉस सेक्शन है और क्रॉस सेक्शन होता ही तब है कि जब वो आइडेंटिकल हो, तो मैंने उसको 2 मल्टीप्लाई बाय ट्राइंगल करके लिख दिया. ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास बाकी ये दो तीन तीन रेक्टेंगल्स आते हैं. ये कहाँ से आए? पहला रेक्टेंगल जो मैंने बनाया हुआ है 32 मल्टीप्लाई बाय 10 का, ये है 32 लेंथ और ये है 10th लेंथ. तो मैं इसको देखो, इसका मतलब है कि ये वाला एरिया जो बाहर हमें नजर आ रहा है, जो हमें सारा विजिबल है, तो ये वाला ये हो गया. ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है 6 मल्टीप्लाई बाय 32. अभी 32 तो है, 32 के साथ ये 6 आ गया. 6 का मतलब है कि ये नीचे वाली लेंथ, ये वाला, ये जो बेस है जो हमें नजर नहीं आ रही उस तरह, पर जब हमने लाइन ड्रॉ की तब हमें विजुअलाइज हुई है कि अच्छा ये नीचे वाली है, तो ये हमारी ये हो गई. ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट हमारे पास 8 इंटू 32 है, वो कौन सी, ये 8 है और ये 32 है. अब इसका क्या बनेगा? अगर ये 32 है इसका मतलब है ये लेंथ भी 32 है, राइट, अंदर वाली. तो इसके साथ जो बैक साइड पे फेस है जो हमें नजर नहीं आ रहा, ये इतना सा फेस जिसको मैंने अब हाईलाइट किया है, ये फेस हमारा 8 इंटू 32 को रिप्रेजेंट कर रहा है. और फिर मैंने इनके सारों के आंसर लिखे और उसको ऐड कर दिया और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया. Alright, in question number 5, we had a cylindrical drain and we were supposed to find the volume of the drain. So, finding the volume, we had this formula, area of cross section multiplied by height. Area of cross section is, this is the circle. Uh, so, we will multiply it with the height. Height will be another length, which will be this one, that is 3 meters. So, we use the formula pi r square area of a circle and then we multiply it by h.
We had 1.2 meters ये length हमारे पास थी, which is basically a diameter 1.2. So we have to divide it by 2 in order to get the radius. So what I did was pi multiplied by 1.2 divided by 2 whole square multiplied by 3, and I got the final answer. And I wrote it into three significant figures. Make sure you do the same, because when it's not mentioned somewhere specifically, it is preferred if you answer it in three significant figures. For question number 6, the diagram shows a tube containing chocolate sweets. So this is the container of a chocolate sweet toffees, and we have to find the total surface area of the tube. So surface area of the tube means we have to find two circles. We have to find the area of two circles, and then we have to also add the area of the curved surface area. We just looked into in the beginning of the video that where it's of 2 pi r and it is of h length. So the formula for curved surface area only is 2 pi r h. That's what I wrote over here as well. And for finding 2 into circles, I used the formula 2 multiplied by pi r square, and we were given 2.2 centimeter. Here I divided by 2. इसी क्वेश्चन के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर ही मैंने कर दिया था, बट यहाँ पर आई थॉट बिकॉज वी हैव टू यूज देम टू टाइम्स, I did find the radius on its own. That was the diameter. I used this formula and I put the values and I got the answer. And that's how I did. I substitute the values in all of them, and then I put it in terms of pi, and then I put this in exact statement in the onto the calculator, and I received this very answer. The answer was 66.71 and something, but I just wrote it up to three significant figure. Let's move on to the next question now. I hope this is clear. Now for question number 7, it says the diagram shows the solid glass case for a clock. So this is a solid glass case, and the case is a cuboid with the cylinder removed. So this is a cuboid and we have this cylinder removed. यहाँ से हमारे पास cut हुआ हुआ है, and we have to tell the volume of the glass. सो वॉल्यूम ऑफ द ग्लास हम किस तरह से बात करेंगे, हम इसको बिल्कुल इसी तरह देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे. एंड थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि हमारे पास एक स्क्वायर है और इसके अंदर एक सर्कल है और ये हमारा एरिया शेडेड है, और वो इसी तरह हमसे पूछ रहे हैं कि शेडेड एरिया माइनस नॉन शेड एरिया, मानी रिक्वायर्ड एरिया माइनस नॉट रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विच इज रिक्वायर्ड माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज रिमूव्ड. तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. या तो मैं यहाँ पे लिख सकती थी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय हाइट, या मैं इस तरह भी लिख सकती थी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. बट क्योंकि मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में पूरा लिख रही थी, आई थॉट कि हमें इस तरह से लिख लेना चाहिए. अब एक दफ़ा ट्राई कर लेना चाहिए. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय हाइट ही है. पाई आर स्क्वायर हमारे पास क्रॉस सेक्शन है क्योंकि ये सिलेंडर है, और हाइट जो है वो हमारी ये होगी. दिस वन विल बी दी हाइट. आई इवन बोल्डेड इट टू टेल कि अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग इस क्वेश्चन को वैसे देखें तो हमें नहीं समझ आएगी कि कौन सी, इन्होंने तो हमें हाइट दी नहीं, कोई और लेंथ दी नहीं. इन्होंने दिया है, उन्होंने हमें बताया कि ये जो क्यूब है इसकी जो ये विड्थ है या ब्रेथ है या जो ये वाली लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है. तो यहीं पे वो अंदर से इस तरह फुल रिमूव हुई है, तो ये भी इसकी 4 सेंटीमीटर होगी. तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे बस. बाकी मैंने कैलकुलेटर में पुट किया. आई गॉट द फाइनल आंसर एज दिस. Alright, for question number 8, it says a storage company has a rectangular storage area. अब rectangular है तो अब जाहिर सी बात है वो 2D एरिया तो नहीं ना होगा, एरिया की बात हो रही है. तो कोई प्रॉपर एक कंपनी के पास एक स्टोरेज बॉक्स है तो वो तो क्यूबॉइड होगा जो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया. फिर उन्होंने यहाँ पे लेंथ्स बताई हैं और उन्होंने कहा इसका वॉल्यूम बताओ. तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके उनके अंदर वैल्यूज डाल दी हैं. डज नॉट मैटर, ऑब्वियसली इट डज नॉट मेक सेंस कि 8 मीटर की जो मैंने लेंथ बनाई है वो बहुत छोटी है और 2.8 वाली बहुत बड़ी है. तो आई जस्ट ड्रॉ दैट रैंडमली. तो इट डज नॉट टेल के कौन सी लेंथ कितनी है. इट्स नॉट ऑन स्केल. ठीक है. वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय हाइट. आई कुड हैव रिटन लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट एज वेल फॉर क्यूबॉइड, but let's write it as it is for the better practice. And then I substitute the values and I got the final answer. Let's do the part B for this question. Now for part B, the question is how many cardboard boxes of these dimensions can fit into the storage area. तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर ही इसका वॉल्यूम लिख दिया. अब यहाँ पे एक छोटा स्क्वायर मैंने बनाया है, वो क्यूब बनाया है,
और उसकी मैंने डायमेंशंस लिखी हैं और उनका मैंने वॉल्यूम फाइंड किया है, ताकि मुझे पता चले कि एक बॉक्स का वॉल्यूम कितना है। अगर एक बॉक्स का वॉल्यूम इतना है और टोटल वॉल्यूम कितना है हमें पता है 448, तो हम 448 को डिवाइड कर देंगे 1.25 से, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने बॉक्सेस जो है स्टोरेज एरिया जो है रेक्टेंगुलर उसके अंदर पूरे आ सकते हैं। आई गॉट द आंसर 358.4। बट क्योंकि हम लोग 0.4 एक्स्ट्रा बॉक्स कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते, हम काट नहीं सकते, कुछ इस तरह से नहीं कर सकते, सो फुली फिट जो आएंगे वो 358 बॉक्सेस आएंगे। सो दैट विल गिव अस द पार्ट बी's आंसर। नाउ लेट्स लुक एट द सी पार्ट। नाउ फॉर द पार्ट सी, उसने हमें कहा है सरफेस एरिया ऑफ ईच कार्डबोर्ड बॉक्स। तो ये हमारे पास कार्डबोर्ड बॉक्स की डायमेंशन थी, क्योंकि हमें पता है ये भी इसके भी 6 फेसेस हैं और दो दो आइडेंटिकल है हमारे पास, वॉइड है। तो हम 2 मल्टीप्लाई बाय रेक्टेंगल का एरिया, 2 मल्टीप्लाई बाय रेक्टेंगल ले लिया और 2 मल्टीप्लाई बाय रेक्टेंगल का एरिया, एंड वी विल ऐड ऑल ऑफ देम। तो कभी हम 1 को 0.5 से मल्टीप्लाई करके करेंगे, एक ये वाला हम लोग कर लेंगे और मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि फ्रंट और बैक इधर वाला लेकर इसका भी ये वाला और इसका बैक, टॉप और बॉटम, इस तरह से मैंने सारे लेकर सारों का आंसर लिख दिया, एंड दैट्स हाउ आई गॉट द आंसर फॉर दिस पार्ट। I made a little mistake. Can you like find it out? I'll give you 3 seconds to do that. Three, two, one. I bet you did not. You were unable to find it. If you were, let me know. It should not be cube. It should be square because it was the surface area. I will make sure to make mistakes in the following questions, and I want you to point out the mistakes. Now let's do question number 9. Okay, so that's the last question. Wuyu, what's the name? Wuyu. Wuyu. Wuyu is moving to Brazil for his new job. He has hired a shipping container of dimension these and to move his belongings. Firstly, it asked to calculate the volume of the container. I again drew a very pretty cuboid and I gave the dimensions to it, and then I just used the formula length into breadth into height, and I calculated the answer, um which was 48 meter cube. The next question was, he is provided with crates to fit the dimensions of the container. Now he had crates with him to fit the dimensions of the container to see that if it uh, fits in the जो उसके पास crates थे क्या वो उस कंटेनर के अंदर फिट होते हैं। उसने कहा उसको 8 crates रखनी है और हर क्रेट का जो वॉल्यूम है वो 5 मीटर क्यूब है। क्या वो कंटेनर के अंदर फिट हो जाएंगी? हमने इसका तो वॉल्यूम निकाल लिया, हमें पता है एक क्रेट का वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब है, 8 क्रेट्स का वॉल्यूम कितना होगा? तो उसके लिए हम लोग को 5 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास आंसर है 40 मीटर क्यूब। अब 40 मीटर क्यूब वॉल्यूम 48 मीटर वॉल्यूम वाले के अंदर जाहिर सी बात है आ सकता है। कौन सा ये 40 है, 48 से ज़्यादा तो नहीं है ना? तो ये फुल हो सकता है। दैट इज वाई विल दे फिट इनटू वन कंटेनर? यस, दे विल फिट इनटू वन कंटेनर, and that's where exercise 7.6 comes to an end. And let me know if you have any confusions or any doubts. I would love to help you with them. Till then, take care. Allah Hafiz.